Assalamu alaikum everyone. Hope you are all doing well. Today's video is especially for everyone who often asks me if silk paints can be used on organza and whether the salt effect works on it. This video is just for you. If you are watching for the first time, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon so you don't miss any future videos. Also follow me on Instagram and Facebook. Now let's get started with today's video. ऑर्गेन्जा को स्पंज की मदद से पानी लगाएं क्योंकि ये पानी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं करता, इसीलिए इसकी क्रिस्पीनेस की वजह से इसको थोड़ा सख्त हाथों से पानी से वेट करना होता है. Use a sponge to dampen the organza with water. Since organza doesn't absorb water quickly, you will need to apply a bit of pressure to make it wet due to its crispy texture. ऑर्गेन्जा एक क्रिस्पी फैब्रिक है और जितना ये क्रिस्पी होता है उतना ही सी थ्रू भी. अगर हम पेंटिंग की बात करें तो मुश्किल फैब्रिक है क्योंकि इस पे कोई से भी कलर्स परमानेंट नहीं रहते. अगर आप कोई ब्रांड जानते हों जो बेस्ट फॉर ऑर्गेन्जा हो तो शेयर ज़रूर करें. Organza is a crispy semi-transparent fabric. Painting on organza can be a challenging as colors tend not to stay permanent. If you know of any brands that work well on organza, please share in the comment box. यहाँ मैंने मैजेंटा और ब्लू कलर सेलेक्ट किए हैं. आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं. दोनों कलर्स को वीडियो के मुताबिक स्पॉन्ज से अप्लाई किया और दोनों को ब्लेंड कर दिया. Here I have selected magenta and blue, but you can choose any color you like. I applied both colors with a sponge as shown in the video and blended them together. मैंने दो तरह का सॉल्ट सेलेक्ट किया है, थिन और थिक. एक तरफ से मैं थिन सॉल्ट स्प्रिंकल करूँगा और दूसरी तरफ से थिक सॉल्ट के पीसेस को एक एक करके ऑर्गेन्जा पर थोड़े थोड़े फासले पे रखता जाऊँगा. I have selected two types of salt, fine and chunky. On one side I will sprinkle the fine salt and on the other side I will place pieces of chunky salt on the organza. वीडियो में ऑर्गेन्जा आसानी के साथ इसलिए देखा जा सकता है क्योंकि मैंने टेबल टॉप पे ब्लैक फैब्रिक बिछा रखा है और अगर आप ऑर्गेन्जा के नीचे कोई लाइनिंग नहीं लगाओगे तो उस सूरत में इस पे किया गया पेंट बदनुमा लगेगा. टाइम लैप्स में सॉल्ट इफ़ेक्ट ऑर्गेन्जा के सी थ्रू होने की वजह से तेज़ी से आ रहा है और दोनों तरह के सॉल्ट्स ने मुख्तलिफ इफ़ेक्ट दिया है. In the video, the organza can be easily seen because I have laid a black fabric on the tabletop. If you don't use a lining under the organza, the paint may look unappealing. The salt effect appears quickly in the time lapse due to the organza's transparency, and the two types of salt have produced different effects. ऑर्गेन्जा बाकी फैब्रिक्स की निस्बत जल्दी ड्राई हो चुका है और इस पे इफ़ेक्ट भी जल्दी आया है. फैब्रिक अगर ड्राई हो जाए तो सॉल्ट को ऑर्गेन्जा से रिमूव कर दें और बॉटल में दोबारा इस्तेमाल के लिए रख दें. ऑर्गेन्जा ड्राइज फास्टर दैन अदर फैब्रिक्स and the effects appears quickly as well. Once the fabric is dry, remove the salt from the organza and store it in a bottle for future use. सॉल्ट इफ़ेक्ट ऑर्गेन्जा पे अच्छा लग रहा है. अब सिल्क पेंट्स को फिक्स करने के लिए दोनों तरफ से ऑर्गेन्जा को आयरन कर लें ताकि हमारे आयरन फिक्स्ड सिल्क पेंट्स फिक्स हो जाएं. The salt effect looks great on the organza. Now to fix the silk paints, iron the organza from both sides to ensure that the painted designs are set properly. आयरन करने के बाद सॉल्ट निकालने के लिए ऑर्गेन्जा को 1 से 2 मिनट के लिए टैप वाटर में डिप कर दें और उसके बाद निकाल कर वायर पे हैंग कर दें. ऑर्गेन्जा को निचोड़ने और आपस में रगड़ने से गुरेज करें. After ironing to remove the salt, dip the organza in water for 1 to 2 minutes. Then take it out
and hang it on a wire. Avoid wringing or rubbing the organza. ऑर्गेन्जा ड्राई हो जाए तो दोबारा से आयरन कर लें ताकि इसके रिंकल्स रिमूव हो जाएं. Once the organza is dry, iron it again to remove any wrinkles. Finally, the beautiful effect created by the salt is in front of you. Organza is crispy, wiry, and see-through. But despite these qualities, the salt effect with silk paints has added a stunning beauty to it. Try this salt effect on organza yourself, and if you have any questions, feel free to ask in the comments. Don't forget to like the video and share it with friends. And before you go, please subscribe to the channel. Take care of yourself. Keep me in your prayers. Allah Nigeban.